audible now? Is this voice better? Sir, your voice is. How about now? Is it any better now? I think it should be fine now. So it's fine. Fine. So we are going to learn about oxidation state in detail in the chapter redox reaction, but please we will take it. The charge, please write this with me. The charge which an atom of element has in its ion or appears to have in its combined state. In its combined state. So there are two cases here. Case one, agar aapke paas ions hai, then in ion you just have to look at the charge. Right? For example, in the case one, that is for ions. For ions, oxidation state, yeah, oxidation number, it is equal to charge on the ion. Charge on the ion. Example की अगर हम बात करें, you have sodium positive. Here I will be writing the oxidation states. Sodium positive, chlorine negative, magnesium 2 positive, aluminium 3 positive, hydrogen positive, hydrogen negative, chlorine negative, aluminium तो लिखते हैं. ठीक है, तो sodium is going to have what? +1. Chlorine minus. अच्छा, और जैसे oxygen पे 2 negative, nitrogen पे 3 negative, this could be there also. Mg is having +2, aluminium +3, hydrogen +1, -1, hydride is -1, chloride -1, oxide -2, nitride -3. So these are the oxidation states. That's it. Now, in combined state, what we need to do? At the case 2, for combined state. For combined state, इसमें then we can have two different cases when it is combined with its own atom. When it is combined with its own atom, जैसे H2, O2, N2, P4, S8, carbon, helium. So when it is combined with its own atom, there is no change. Then the oxidation state, it is equal to 0. No, oxidation state, it is equal to 0. Oxidation state is equal to 0. Now, in combined state, it can be combined with different atom. It can be combined with a different atom. Combined with different atom. When it is combined with different atom, then atom with higher electronegativity. Higher electronegativity gets negative oxidation state per bond. ठीक है, negative oxidation state पे ध्यान रखिएगा, per bond का मतलब समझा देंगे. Now in this, in order to
in order to see which is more electronegative, we need to understand. We need to also know the electronegativity series. And we all know electronegativity series from the last lecture. Fluorine, then oxygen, then nitrogen, then chlorine, then bromine, then iodine, then sulfur, then carbon, then phosphorus, then hydrogen. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, for example, if they have hydrogen bonded to chlorine, which is more electronegative? Now I need your answer, right? Which is more electronegative, hydrogen or chlorine? Which is more electronegative, hydrogen or chlorine? Which is more Chlorine. electronegative? Chlorine. So chlorine will get one bond to one negative charge. Hydrogen will get positive charge to balance it. Opposite तरह देखिए, nitrogen, ammonia. In ammonia, nitrogen has, which is more electronegative? Nitrogen. Nitrogen. Yes. So for this bond, nitrogen will have -1, hydrogen will have +1. For this bond, nitrogen will again have -1, and this hydrogen will have +1. For this bond, nitrogen will have again -1, and then will have +1. So in total, you can see nitrogen is having how much charge? -3. Can you see that? Yes or no? Does this make sense? करी देते हैं मतलब से. -1, -1, and -1. In total, nitrogen is having -3 charge. But if nitrogen is attached with, let us suppose chlorine, let us suppose hydrogen, and let us suppose hydrogen कर देते हैं, तो hydrogen एक chlorine, ठीक है? So because of this bond, which is more electronegative, nitrogen or chlorine? Which is more electronegative, nitrogen or chlorine? Chlorine. The chlorine will get -1, nitrogen will get +1. Now nitrogen and hydrogen, which is more electronegative? Which is more electronegative? Nitrogen. So nitrogen will get -1, and hydrogen will get +1. Here also -1. My voice is lagging. Is it lagging for everyone? Yes, sir. How's it now? Am I audible now? Yes, sir. So for the two hydrogens, nitrogen will have -1, -1, hydrogen will have +1. Now, if you look at the overall charge, -1 +1 will cancel each other out, and nitrogen will now have how much? Overall -1. Can you see that as one line? Hydrogen has +1, -1, -1. +1, -1 will cancel each other out, and -1 will be remaining. So the overall charge is -1. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes? ठीक है, और देखिए अभी देखिए उसका देखने को टाइम जन्म दो बड़ी होता है. Similarly, let us suppose you have hydrogen peroxide which has a structure like this. Now, if oxygen and hydrogen, oxygen will get -1 and hydrogen will get +1. But if you look at oxygen-oxygen bond, then both of these oxygen are what? They are having same electronegativity. Jasola, can you hear me, guys? Others, can you hear me? Combined with different atom with more electronegativity gets negative charge per bond. Am I audible, guys? Hi. आवाज नहीं आ रही है. हेलो, आ रही है जोगिता? यस जोगिता, Yes, sir. आवाज आ रही है? What? Am I audible? Yes, sir. Yeah. The screen can't hear me. Please join. ठीक है. Now, because of oxygen and oxygen bond, both are having same electronegativity. That's why both will be having 0, 0 because of this bond.
Now again, if I look at the other hydrogen, it is after oxygen hydrogen bonds, it minus one, which will be plus one. So overall charge on oxygen is equal to one, but minus one here also it is minus one. Right? So, you have defined, please start writing where you have once you are done. Let me know if I have to scroll up. Raise your hand if you're done. Listening, hear me. Yes, listening. हेलो अब आपकी आवाज नहीं आ रही है आई Sir, कैन can हियर hear यू you. या Sir, can you explain the last one, the last example? yes. Right. So let us look at the bond between hydrogen and oxygen. Okay, just wait. The bond between hydrogen and oxygen. Okay, yes or no? My God. We are looking at the bond between what, Christine? We are looking at the bond between what bond? Tell me. Yes. Yes. Christine, that is which bond? The bond between hydrogen and oxygen. Which is more electronegative? Hydrogen or oxygen? Which is more electronegative? Sorry. Which one? Christine, can you give your mic on? Between hydrogen and oxygen, if you look at the first bond between hydrogen and oxygen, then in this bond, oxygen is more electronegative, that is why it gets a negative charge, and hydrogen gets a positive charge. Between the bond that is between oxygen and oxygen, both oxygen atoms are same, they will be having same electronegativity. So that is why none is more electronegative. That is why both of the options will take 0 and 0. Right? That is true. Then when we look at oxygen and hydrogen, then again oxygen we get -1, hydrogen we get +1. So overall charge on oxygen is what, -1. The overall charge on the oxygen is also -1. Make sense? Yes, Yes, sir. make sense? Yes, sir. Also, सभी आपके दोस्त ने तो ज्वाइन नहीं किया सभी am I audible? Yes, sir. अब बात नहीं पैदा से What, sir? Your voice is really low.
If you talk with रुपैदा, बात नहीं आपकी रुपैदा से. सर थोड़े दिन से बात नहीं हुई मेरी उससे. पूछिए अगर आप उसको समझ में नहीं आया है तो she did not join. She started with trying to, I think, get one class in the batch. लेकिन क्या प्रॉब्लम थी उसको? I think it's my internet Kindly connection. also get issue. I can't understand or like really hear what are you saying. Can others understand? Jasleen, Zainab, where आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? No, sir, your Yes, voice is Jovita? cracking. Sir, your voice Jovita, is what about cracking. you? Sir, Yeah, tell me. Now tell me. Jovita, you saying something? nothing. Nothing. ठीक है. Is it still cracking? Zainab, अभी भी is it still cracking? Is it still cracking, guys? It's cracking a bit. So. Yeah. ठीक रहेगा. How is it now? How is it now? So it's cracking. अरे चल ठीक है. काम दीजिए. आगे रिटर्न कर लेंगे. It is fine now. I mean, I can see the speed and everything. It's fine.
whatever negativity gets So your voice is still cracking. let me restart my system. That's my that's where my just back. Let me read. Please be here. Don't go. अब बताइए जरा how is it now? Is it still cracking? Tell me, guys.
Yes, sir. Flashing. Sir, you're audible. Audible. There are some rules, but we can see. You are doing observation state from the structure to get the observation. Right? There are some general rules. Try to write rules and in detail for redox reaction. Even though sorry, detail will come on the redox reaction. So rules for oxidation state. Number one rule is hydrogen is always positive. Step when attached with metal. Metal में होगा then it is minus. Second, fluorine is always negative. Third, oxygen is usually -2. -1 का एक के सब लोगों ने देखा है, but generally fourth, halogens are generally -1. लेकिन और देख लीजिए फ्लोरीन को पहले देखिए आज ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन है ना. If you have having oxygen, then you will give -2 to oxygen first. Then you will determine for hydrogen. This is group 1. Group 1 it is always +1. And group 2 elements, these are always +1. ठीक है. अब उसके बाद we are going to do determine the oxidation state of 2 elements. सवाल में लिखे नहीं कुछ बात नहीं सवाल लिखिए. Determine oxidation state of underlying elements of underlying elements. I hope you have written the rules and this material differently. Although detailed questions फिर वही कहाँ आएंगे redox reaction है ना. Suppose you are having Al2O3 and I want to calculate the oxidation state of aluminium. ठीक है. तो हम क्या करेंगे पहले aluminium के oxidation state को क्या कर लेंगे x. Let oxidation state of aluminium it is equal to x. ठीक है. x कर लिया हमने. How many aluminium? 2 aluminium. What is the oxidation state of aluminium? It is x plus. Next, what is the element? Oxygen. How many oxygen? 3. What is the oxidation state of oxygen? Always minus. Usually minus 2. Minus 2 लेके चलेंगे. Is equal to. What is the overall charge? Overall charge is 0. Okay. Now we can find out the x. What will be x? 2x minus 6 equal to 0. 2x is equal to plus 6. X is equal to plus 3. Does this make sense? You're going to please tell me. Does this make sense? उसी तरह देखिए KMnO4 क्या बताइए KMnO4 बताइए कैसे करेंगे. MnO4 negative. MnO4 negative. Overall charge is negative here. Now we want to calculate the oxidation state of Mn. So oxidation state of Mn क्या ले लेंगे x ले लेंगे. How many manganese? 1 manganese to x plus. What is the other element? Oxygen. So oxidation. How many oxygen? 4 oxygen. Oxidation state of oxygen -2. It is equal to overall charge -1. X
minus 8 equal to minus 1 x equal to 8 minus 1 x equal to plus 7. Does this make sense? Please tell me. और देख लीजिए तीसरा है K2 Cr2 O7 underlined element is chromium. Oxidation state of chromium X. How many chromium? 2 chromium. What is the oxidation state? X plus. What is the other element? Potassium. How many potassium? 2 potassium. What is the oxidation state of potassium? Group 1 element. That is why it is plus 1. Plus. What is the other element? Oxygen. How much oxygen? How many oxygen? 7. Oxidation state of oxygen minus 2 equal to 0. Overall charge. Overall charge is 0. So 2x plus 2 minus 14 is equal to 6. 2x minus 12 is equal to 0. 2x equal to minus 12. X equal to minus 12 plus 12. X equal to 12 by 2. X equal to plus 6. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. समझ में सबको आया बताया? Yes, sir. Zainab, can you please turn your mic on? Can you please turn your mic on, Zainab? What is the overall charge in Al2O3? Can you see any charge? No, sir. Zainab, can you see any charge? No, no. 0. What is the? Can you see any charge in MnO4 negative? Yes, sir. What is the overall charge? -1. ठीक है उसी तरह से अगर आपको पता चलता है C2 O7 negative protine. What is the overall charge? What is the overall charge? Is Zainab? 2 negative. Yeah, correct. आ गया अब आपको? Yeah, Yes. very good. कितना ही डिटेल आएगा, ठीक है? पढ़ाई है आप लोगों को छोटी छोटी चीजें इसमें काफी है, ठीक है? Raise your hand, student. Just waiting for Sabiha. Sabiha, just waiting for you. Now, और पढ़िएगा और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक देयर इज वन टॉपिक ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स है ध्यान दीजिएगा ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स तो जो ऑक्साइड्स होते हैं ना दे कैन बी मेड बाय आइदर अ मेटल और अ नॉन मेटल so this is oxide can be made with
मेटल और किससे बनाया जा सकता है? नॉन मेटल से भी बनाया जा सकता है। बनाया जाएगा मेटल या फिर किससे? नॉन मेटल। ठीक है। मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, these are, एक होता है, एक जो मेटल के साथ होता है, उसको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द oxides of metal are what? They are basic. That means they will act as a base and reacts with acid. React with acid. Non-metal के जो होते हैं, they are generally acidic oxide. Acidic oxide. They what will happen? दोनों पॉइंट लिख लेंगे. Can you guys write these 2 points? Act as acid, react with base. Yes or no? जो बता देती हैं शायमा. तभी हाँ. लिख लेंगे ना भाई. जवाब ही नहीं आते इतना तो. Acts as acid, reacts with base. Some metallic oxides are amphoteric. ऐसे होते हैं. Amphoteric. Amphoteric oxides क्या होते हैं? They will react with both acid and base. React with both acid and base. Acids and base. And non-metallic oxide, there are some which are neutral oxides. There are neutral oxides. Neutral oxides क्या होंगे? They will neither react with acid nor they will react with base. मतलब रिएक्ट क्या करना है? रिएक्ट क्या क्या होता है? हाँ, इफ यू ऐड न्यूट्रल ऑक्साइड इनटू वाटर, ठीक है, तो वो एसिडिक के बेसिक नहीं रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे ना, तो पीएच क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ऐसा समझ लीजिए. तो दे नाइदर रिएक्ट विथ एसिड्स नॉर विथ बेस. ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन मेटल बनाता है? बहुत ही हमारा एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, पीबी इज लेड, एसएन इज टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इंडियम, जर्मेनियम. ये सर आसान है? हाँ, आसान. ऐसे याद कर लीजिए. जिनको थोड़ी हिंदी आती है उनके लिए काफी आसान हो जाएगा. जनाबे आली. जनाबे आली ने, बी आर क्यों लिखा हमने? जनाबे आली ने बेकार, बीई, बेकार. मतलब बेकार कैसे हो जाएगा? बेकार. बे, बेकार. ठीक है, दोनों को मिला के बेकार. बाद में आप लोग को अभी लिख देते हैं ऐसे. बेकार गाया. पंजाबी. पंजाबी सॉन्ग. जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग. आज सब भिखारी इंदौर गए. आज सब भिखारी इंदौर गए. नाउ इन न्यूटन ऑक्साइड कैसे याद रखना है? एनओसीओ. एनओसीओ, ये दो हो गए. एनओसीओ. ठीक है, वैसे ये होगा N2OH2O. These are the four neutral oxides which are made by non-metal. चलिए, so copy कर लीजिए प्लीज.
बेशक है स्टूडेंट, बहुत पढ़ा दिया मैं तो आप लोगों को। ओ माय गॉड, नंबे वाली के क्या है? इंदौर, सब भिखारी इंदौर गए। जस्ट वेटिंग फॉर जो बेटा। और एक चीज होती है वैलेंसी। वैलेंसी पढ़ाया है क्या हमने? तो वैलेंसी शायद पढ़ा दिया ना हमने। हाँ वैलेंसी पढ़ा दिया ना। हाँ ठीक है ठीक है, वैलेंसी पढ़ा दिया ना। तो ये मतलब पढ़ाई तो और भी पढ़ाया जा सकता है बहुत कुछ, लेकिन इतना काफी है आपके लिए। अब आते हैं उस मशहूर सवाल पे। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी, दिमाग खोलने वाला सवाल है। सीमिंगली टफ, दैट इज वाई इसको क्लास नहीं करा देते हम, बिकॉज व्हेन यू लुक एट एनसीईआरटी देन यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम। देखिए, यू डोंट नीड टू राइट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का डेटा आपके पास यहाँ पे मौजूद। दिस इज द डेटा। तो सब बताइए, ऊपर की बातें तो बेकार है। वी जस्ट नीड द टेबल, इन द टेबल। ठीक है, तो थोड़ा सा आई नीड हु विल आंसर द क्वेश्चंस, हु विल आंसर माय क्वेश्चन। चलिए मैं सर सवाल रखेंगे मैं सर मेरी, हु विल आंसर माय क्वेश्चंस, इसे पूछेंगे। दिस डेल्टा H1 is first ionization enthalpy, delta H2 is second ionization enthalpy ना। डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, समझ में आ रहा है? yes or no पेशल मी, समझ में आ रहा है? yes or no? अरे बोलो भाई। कीप योर माइक ऑन, कीप योर माइक ऑन। इसमें तो हम कुछ कराएंगे, आपको जवाब देना है बस, ठीक है? आपको बस जवाब देना है, ठीक है? माइक ऑन, माइक ऑन, माइक ऑन, माइक ऑन, माइक ऑन। सबिहा, जो पिता, जस्टीन, शायम, अज़ैन, जल्दी करें ना, फिर क्लास जल्दी करो जल्दी। माइक ऑन। अच्छा बताओ, least reactive element we don't know much, but we have thought about and we have seen the properties of metal. Metal has tendency to bolo, metal has tendency to bolo, metal has tendency to lose electron. what? Lose electron. Sir, there are background. एक बार माइक ऑन करें शायमा, शायमा turn your mic on, let us see ना कितना बैकग्राउंड नॉइज है। माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, नहीं आ गया बस। आप पढ़िए इसकी तरह, which of the, can you read this statement शायमा? Which of the above elements is likely to be? ठीक है, देखिए आप मेरी बात माने नहीं माने। जैनब, was there any background noise? जैनब, शाइमा की तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज था? No, sir. कुछ नहीं है, ठीक है। तो जूम takes care of that, okay शाइमा, don't worry, there is no background noise. So the least reactive element, what is this? The least, अच्छा एक बार आपको बता देते हैं, ये कहाँ से पता चलेगा least reactive? We have what are the properties we have learned? We have learned about Z effective, we have learned about atomic size. Then we started learning about the main properties. Ionization enthalpy tells about how easy it is to remove electron. Why we need to know how easy it is to remove electron? Because if an element can remove electron very easily, if we can remove an electron from an atom very easily, that atom will behave as that metal या non metal. अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो it is metal or non metal? Non-metal. Non-metal. बहुत बढ़िया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर देखो, हम पागल है भाई? नहीं हम पागल नहीं, हम है पागल, बच्चे पढ़ते ही नहीं। तब भाई छुट्टी मना ली सिर्फ। डेल्टा HI इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना? तो इस
इट इज, देखिए metals have tendency to, बोलो, complete the sentence. Metal have tendency to lose electron, gain electron. बोलो, lose electron, gain electron. Lose electron. Lose electron. Metal has tendency to lose electron. If an element is losing electron very easily, that element is a metal. Makes sense. If element is losing electron easily, that element is a good metal. Good metal will what? It will be reactive metal. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. How does reaction happen? Transfer of electron is reaction. If we have an element which wants to lose electron, that means highly reactive. If there is an element which wants to gain electron, highly reactive non-metal. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. बोलो भाई. Thank you very much. चलिए. देखिए, first option is least reactive element. We will not talk about that because I want to logically come to the answer to the A question also. So one thing, there are few things that you need to like, memorize. That I will say that you have to memorize. Metal has tendency to lose electron. Metal has tendency to lose electron. Metal has tendency to lose electron. This should be memorized, right? Non-metal has tendency to gain electron. Now, if an element is losing electron, it will be easily losing electron. So delta H क्या होगा? Delta H क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा छोटा. It will lose electron with less energy also. So when they are talking about when they're talking about most reactive element, that means they're saying ionization enthalpy should be low. है ना? That means even if I give small amount of energy, it is going to lose electron. It is going to lose electron. ठीक है, ये तो पहली चीज बनती है. आयनाइजेशन enthalpy देखिए कहाँ कहाँ पे कम है. देखिए जरा कंपेयर कीजिए ना, कर लो. ऐसे चलिए 1 2 3 4 5 6. तो देखिए आयनाइजेशन, इफ आई टॉक अबाउट डेल्टा एच आई, देन डेल्टा एच सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इट इज इन फिफ्थ वन, इट इज मोस्ट हाई ना, 5 पे सबसे ज्यादा. उसके बाद 3, उसके बाद 1 6 4, उसके बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2. सही है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? फिर एक फिर से सीखो, थोड़ा ना बताएं. मेक सेंस? स्टेप दिया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे ठीक है. अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा है कि डेल्टा एच आई कौन सा देखा? 1 देखा. दूसरा भी एक बार देख लेते हैं. डेल्टा एच आई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ना, आई 2 हाईएस्ट 1 में हाईएस्ट है ना, राइट? हाँ, Yes. 1 में हाईएस्ट है. ठीक है, उसके बाद 3 नहीं 5, उसके बाद 5 के बाद 3, 3. देन 3. 2, उसके बाद 4. 2 के बाद 6. 4, उसके बाद 6. 6 का सबसे छोटा 6. ठीक है, 6. अब बताइए क्या ख्याल है? Which is the most reactive metal? अच्छा देखिए 1 और 2, तो देखिए 1 और 2 लाइक सबसे आसानी से निकल रहा था यहाँ पे, राइट? सबसे आसानी से. लेकिन 1 का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वेरी हाई. उतना भी अच्छा मेटल नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बोल दिया कि अब बस खत्म और हम नहीं कुछ करेंगे. ठीक है, बट इफ यू लुक एट 2, look at 2. 2 was having the least, 2 was having what? The least, ये कह सकते हैं आप. अच्छा चलिए ठीक है, उसको तो नाम काट देते हैं. 1 तो नहीं हो सकता है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देके वो बोल रहा है कि हम आई कैन नॉट गिव मोर इलेक्ट्रॉन. दैट मींस मोस्ट रिएक्टिव, इट इज अ मेटल. कंप्लीटली इट विल बी अ मेटल. ठीक है, बात कर सकते हैं इसके बारे में. मेटल होगा लेकिन वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल नहीं है. इट इज अ मेटल दैट
makes that loses only one electron, उसके बाद बोलता है कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वन तो मोस्ट रिएक्टिव तो उसको कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो वन इज नॉट द ऑप्शन। टू इज वन ऑफ दी, सेकंड नंबर का जो एटम है ना, इट इज वन ऑफ दी कैंडिडेट्स है ना, इट कुड बी। टू हो सकता है, और कौन हो सकता है बताइए इधर, देन वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। टू और क्या लगता है? All of you agree ना that 2 can be an element which is most reactive metal. It is one of the candidates. क्या ख्याल है? Yes, sir. Like Yes. it has tendency to lose one electron also, and 2 electron में भी ज्यादा नखरे नहीं कर रहा है, 2 electron से भी ज्यादा नखरे नहीं कर रहा है, ठीक है। और बताइए और कौन हो सकता है? आई थिंक 6 भी आपको लग रहा होगा एक कैंडिडेट है। 6 वाला देखिए, 6 वाला देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, जैसे सेकंड आ रहा था ना, ठीक है। Yes. देखिए 6 को भी एक है ना, 6 को भी कैंडिडेट रखा जा सकता है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 में देखिए, 4 में आई कैन अंडरस्टैंड, बट 4 इज हैविंग अ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो ना। तो इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है तो नॉन मेटल भी हो सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो दे भी दे लेकिन लेना है ना। आई होप यू गाइस रिमेंबर, हाई नेगेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इट इज वांटिंग टू टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 नहीं कैंडिडेट, 2 और 6 हो सकता है। कौन सा? 2 एंड 6। 2 एंड 6 में जब देखा जाएगा, ठीक है, 2 एंड 6 में जब आप देखिए तो 2 में जो पहला इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है ना, मतलब बहुत ही कम, आसपास भी नहीं है कोई, है ना, ठीक है। 1 पे तो हटा ही दो, 2 और 7 में अगर आप देखें तो आसपास भी नहीं है कोई। ऐसे 1000 में यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, तो 2 के आसपास भी बिल्कुल कोई नहीं है, ठीक है। तो 2 हो सकता है, और फिर ऐसा नहीं है मतलब 2 ही होगा, ठीक है, 2 हो सकता है। 6 के बारे में अगर देखा जाए ना, तो 6 का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है इट इज लाइक वेरी लेस, यू कंपेयर क्वाइट लेस बाकी मेटल से। तो वी कैन से दैट इट हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहता है, ठीक है। उसके बारे में तो बात 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 नहीं, इसके बारे में हमको समझ में आया। मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी 2। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा? आई थिंक वो तो काफी अच्छे से दिख रहा है आपको, डेल्टा एच तो काफी हाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी शुड बी हाई, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं। तो द हाईएस्ट इज एट -328, एंड इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉन ionization enthalpy also, ionization enthalpy is also quite high, so it does not want to lose electron। 3 नंबर देखिए, मतलब इसको बिल्कुल मन नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इट वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, एज यू कैन सी -320 बहुत ज्यादा है, इट इज अ वेरी हाई वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये एलिमेंट तो 3 नंबर का हो जाएगा, दिस इज द थर्ड एलिमेंट। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो यहाँ पे द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो ऐसे इफ यू गो टू द एक्सट्रीम लेवल, सबसे खराब नॉन मेटल तो मेटल है, द वर्स्ट नॉन मेटल इज अ मेटल। डज दैट मेक सेंस? Yes. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. है ना, बट ये मतलब नहीं होता सवाल का, ठीक है ना, ये मतलब नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट आउट। You have to choose a non-metal, you have to choose a non-metals and then say which is the least reactive, ठीक है। non-metal पहले चूज करेंगे, उसके बाद least reactive। if I see non-metal तो दो ही non-metal हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, one is जो 3 वाला है, और एक 295। others they don't have that much tendency to gain electron because their electron gain enthalpy is not very high। तो fourth वाला क्या हो जाएगा? least reactive। I'm not saying that it is less reactive, I'm saying it is least reactive in this particular sequence of elements। यहाँ पे least है, even though आपको नहीं सर 328 295 में कितना ही फर्क है, completely understand, but it is the least reactive non-metal। If I talk about non-metal, पहले non-metal देखना पड़ेगा कौन। 3 and 4 are non-metals, in that 3 is reactive, 295 वाला 4 is non-reactive, right? So it is the least reactive in this particular table। Then we are having a metal which can form stably binary halide of the formula MH2। MH2 क्या मतलब इसका? It will be made by a metal in a halogen। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना मेटल कौन होता है? हाइड्रोजन की वैलेंसी तो, एंड मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +2। वैलेंसी मतलब +2 क्या मतलब 2 होगी।
और उससे देखिए वी हैव जस्ट स्टडीड ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आप बता सकते हैं that M की the oxidation state of M is X plus hydrogen they generally have minus one oxidation state is equal to 0, so X is equal to plus 2. That means a metal which has a tendency to lose two electrons. A metal which has tendency to lose how many electrons? Two electrons. ठीक है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन था? हम लोगों ने ये चीज देखा था, सिक्स नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज सिक्स वन, है ना. इट हैज वेरी लो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज हैप्पीली रिमूविंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन बाकी के बन. So this will be the sixth one. अच्छा. The metal which can predominantly form a stable covalent halide for the formula Mx. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला सबसे बढ़िया बंदा कौन है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला सबसे बढ़िया बंदा है द फर्स्ट वन. ऊपर जो होता है हम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम लूज ही नहीं करेंगे. 7300 इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, कोई आसपास भी नहीं है. So it is what? It is only going to make what? Predominantly मतलब it is only going to make Mx type of compound. That means इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? The oxidation state, or it has a tendency to lose only how many electrons? ठीक है, F क्या हो जाएगा? FeB1. अब यहाँ आया लीस्ट रिएक्टिव. लीस्ट रिएक्टिव जानते क्या होता है? जो कि ना तो मेटल की जैसा शो करता हो ना ही नॉन मेटल के जैसा शो करता हो. तो वहां पे आपके पास फिफ्थ वाला एलिमेंट देखिए, its electron is positive. That means it is saying that I don't need electron. Please don't put electron in me. If you want to put electron, you have to give energy. You have to give energy. It does not have tendency to gain electron, and it does not have tendency to lose electron. See, the values are what? Very high. Values are very high. एक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखा जाए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5 का सबसे ज्यादा है फर्स्ट, और सेकंड में सेकंड नंबर पे है. इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एट ऑल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आप देख ही रहे हैं, दिस व्हाट पॉजिटिव. तो क्या हो गया? एनर्जी देनी पड़ जाएगी. तो लीस्ट रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? 5 वाला. द फिफ्थ एलिमेंट इज गोइंग टू बी द लीस्ट रिएक्टर. ठीक है, so this is how from data you can talk about the reactivity of. If you want to copy this down, you can copy this down. Raise your hand once you're done.
It was random. Already, the not have capital. What it? After tell you Pajan's rule. Write the topic. Pajan's rule. Pajan's rule. ठीक है? Pajan's rule क्या है? Covalent character in atom एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है. Pajan's rules does not talk about covalent compound. We do not apply the Pajan's rule in covalent compound. But the compounds which are predominantly ionic, okay, are predominantly ionic. It talks about the covalent, some covalent character in that particular ionic compound. देखो थोड़ा सा अंदाजा होगा आप लोगों को what is the covalent compound और the compound के बारे में जैसे मिल सकते. In terms about the covalent character and ionic compound. Ionic और covalent होता क्या? ध्यान से देखिएगा. Very interesting. Ionic. For example, NaCl. NaCl how it will form? There will be a metal. है ना? Metal क्या करेगा? एक electron. It will give some electrons to non-metal. Non-metal. So metal will get a positive charge. Non-metal will get a negative charge. Now these two charges there will be some attraction because of the positive and negative charges. The electrostatic force of attraction will be there, and that is why what will happen. There will be stereoionic bond will there, and these compounds are known as compound. अच्छा ये कैसे बनता है? Covalent. Covalent is generally between non-metals only. Non-metal का bond रहेगा non-metal के साथ. ठीक है? For example, A is bonded with B. So here we are having a proton, the nucleus of A, because the sign or the identity of every element is its nucleus. Because nucleus has protons, number of protons gives an idea about which element we are talking about. So nucleus A का है और यहाँ पे nucleus B का है. And in between there are electrons. In between there are electrons. So I am making these electrons. ऐसे बात करें. Wave nature type of समझ लीजिए. These are electrons. And these are electrons. Electrons. Now electrons are negatively charged. अब ध्यान से देखिए जरा. The nucleus of A atom. The nucleus of A atom will be attracted towards the electron. The nucleus of B atom will be also attracted towards the electron. But what we are seeing that the nucleus of A and the nucleus of B, they are attracted towards each other. That's indirectly happening because of the presence of electrons between those nuclei. The nucleus of A atom and the nucleus of B atom, they have certain. एक तो मतलब है, if there is no electron between, यहाँ पे कोई electron नहीं है, तो ionic. If there is electron in between the combining atoms, it will be covalent. Does that make sense? ये तो ना फिर मुझे शिक्षा में लाना क्यों बेटा? फसल में नहीं है. बोलिए. ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा. ध्यान सुनिएगा. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो निकल के बाहर नहीं आएगा ना कहीं से. Electrons can be pulled. Electrons can be pushed. If you, like for example, electronegativity, अगर आपको याद हो, tendency to pull the electron, right?
इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जा सकता है। ये बात समझिएगा। Let us suppose we have a condition in which there is a small positive charge. Okay, we have made an ionic compound in which the metal is very small. The one which has lost electron is very small, and the negative charge ion, it has a very large sign. It has a very large sign. ये आपके पास मान लो इसको मैं ऐसे कर देते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन, ये है, and this is anion. Because if the metal होगा ये non metal has given electron to the non-metal, so that electron and whatever electrons are there, it will be in the valence shell. Valence shell electron के बारे में समझिए जरा, इसका देना ही पड़ेगा. This is negative charge, ठीक है, this is anion negatively charged. If the positively charged thing is very small, then what it will do? It will attract the electrons, और ये attract को किस तरह से करेगा? It is attracting the electron like this. Can you see that? Yes or no? Because it is one point. एक पॉइंट का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही इंटेंस होगा. Like if there is a positive charge in a very small, positive charge in a very small space, very small volume, it will have a very high tendency to pull things. अगर यही चार्ज बड़ा हो जाता, अच्छा, when anion is larger, anion is larger, then it can be deformed easily. तो उसपे इलेक्ट्रॉन को खींचा आसानी से जा सकता है, because all the valence shell electrons are very far away from the nucleus of the anion. Anion have a nucleus. If the anion is large, the valence electron will be very far away. That is why the nucleus of the anion is not able to pull those valence shell electrons. तो कौन pull कर ले रहा है? Positive charge के टाइम, positive charge के टाइम. Another case है आपके पास, जब आपके पास मान लेते हैं टाइम बड़ा हो और अनायन छोटा हो. अब ये देखिए कितना, ये सबको पुल करना चाह रहा है, सबको ये क्या करना चाहता है, पुल करना चाह रहा है. ठीक है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज वेस्टिंग इट्स एनर्जी इन टू मेनी पार्ट्स वेयर देयर इज नो नेगेटिव चार्ज. ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज. अब ये यहाँ से इतने छोटे पोर्शन से कितना ही पुल कर पाएगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन इट पुल, राइट? तो दैट इज व्हाई दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा. If the size of cation is small and size of anion is large, then the covalent character will be high. But the covalent character will be high because there will be some electron density. There will be some electron density between the positive and negative ions. Whatever ions we are having, इनके बीच में क्या हो जाएगा? There will be some electron density, and this electron density between the ions is going to introduce certain covalent character. So cation क्या होता है? When we talk about cation, when we talk about the polarizing power, cations ऐसे हम लिख रहे हैं, तो पहले हम लिख देते हैं, दिस आर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. ठीक है, नाउ कैटायन जब छोटा होगा तभी अच्छे से पोलराइज करेगा. दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन. अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी टेस्ट कर लीजिएगा. ठीक, polarizability of anion. Polarizability means how much it wants to get polarized. And does the anion wants to get polarized? Yes. If it is larger in size, that means covalent character will be directly proportional to size of anion. If the size of anion is very large, then the valence shell electron will be very far away from the nucleus of anion, and the positive charge will pull those valence shell electrons. There will be electrons in between the positive and negative, and that will produce the covalent character. Understood guys? जैसे मैं पिक्चर नहीं होता है, जैसे इन शाइमा ज़ैनब. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो पढ़ा दिया आपको, तो पढ़ते रहिए. अब आपको फिर मेरे को बॉन्डिंग इन द नेक्स्ट क्लास.
in the next class. Example कर लें order of Poland character order of covalent character in following. ठीक है देखिए for example I have lithium chloride, sodium chloride और क्या होगा potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride. ठीक है expansion तो थोड़ा रेडियोएक्टिव हो जाता है. So chlorine is same. We just have to look at what? We just have to look at the size of cation. So covalent character is high when the size of cation is small. So LIC में सबसे ज्यादा covalent character उसके बाद NIC उसके बाद ठीक है like this will be the covalent character. If I have let us suppose lithium chloride, then I have lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide. So it is directly proportional to the size of anion. Size of anion बढ़ेगा तो covalent character बढ़ेगी. Largest sizes of iodine, then bromine, then chlorine, then fluorine. Example क्या चाहते हैं आप?